डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। लिखा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line is representing the following pairs of linear equations intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमने रेशियोज़ को देख के बोलना है कि जो ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस हैं ये दो पेयर्स की, ये इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट पे या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था कि नेचर ऑफ ग्राफ और रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स में क्या रिश्ता है। तो हमने वहाँ पे देखा था, इसको हम एज ए रिमार्क नोट कर लें अपनी इसको जहन नशीन रखें इस बात को कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन ए जनरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल इफ यू है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी पेयर है, दूसरा इसका जो है दूसरी इक्वेशन जो है वो a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। तो अगर इस तरह की बात है, इफ द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स दैट इज दिस रेशियो, इफ हमने ये सीखा था a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो इस सूरत में हमने सीखा था कि इसमें जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो लाइन्स होंगी, वो इंटरसेक्ट होंगी, लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट ए पॉइंट। तो इस सूरत में जो ग्राफ होगा, लाइन्स जो होंगी इस स्फीयर की, दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इस सूरत में इफ दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y। तो ये बात है। दूसरी बात में हमने सीखा था इफ a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इस सूरत में हमने क्या सीखा था, इस सूरत में हमने सीखा था लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल इस सूरत में जो ग्राफ्स होंगी वो पैरेलल लाइन्स होंगी। नंबर थर्ड पॉइंट हमने सीखा था, फर्स्ट पॉइंट सेकंड और थर्ड पॉइंट हमने सीखा था इफ a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, दैट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x is equal to ratio of coefficient n is equal to ratio of constant term, that is all the ratios are equal. If all the ratios are equal, then in that case line will coincident, lines are coincident. So these are three conditions when the lines of representing these two equations will intersect at a points or will be parallel or will be coincident. So in these three cases we can by computing the ratios of the coefficients we can say that whether the lines are intersecting at a point or lines will be parallel or they will coincident. So we will solve the question number 2 in accordance with these 3 pointers. तो पहला जो है, पहली इक्वेशन दी गई है, इसमें पहला पार्ट जो हमें दिया गया है दैट इज 5 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स माइनस, इसको हम नोट कर लें, माइनस 4 टाइम्स y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 7 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स y
-9 इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों इक्वेशन में हम देखें, लेट अस कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट एंड अदर एज इक्वेशन सेकंड। तब जाके हम इसको कंपेयर करें इस पेयर के साथ, कंपेयरिंग विद द जनरल पेयर ऑफ इक्वेशंस। हियर हम देखें, इसको हम कंपेयर करें इस पेयर के साथ, तो हमें पता चलेगा वी हैव इंस्टेड, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x in equation first will be a1. So a1 here is 5, b similarly a2 means coefficient of x in equation second, that is 7. Similarly b1 means coefficient of y in equation first, b1, that is -4. And similarly coefficient of this y in equation second, that will be b2, that is equal to 6. And constant term in equation first, that will denote by c1, that is equal to 8. And constant term in equation 2 will be denoted by c2, that will be equal to -9. So here a1, a2, b1, b2, c1, c2. So we wrote down the coefficients of x and y and the constant terms in both the equations. Now we will know compute the ratios. Now we will do one thing, a1 divided by a2. a1, instead of we write 5 divided by a2 means 7 over here, so it is a ratio of coefficients of x. Now what will be b1 by b2, that is -4 divided by 6, that can further be simplified as 2 2s are 4, 2 3s are 6, that is equal to -2 by 3. And c1 by c2 is equal to 8 by -9, that can be written as -8 by 9. So now we see that this ratio is not equal to this ratio. These ratios are not equal. Therefore a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. So जब ऐसा है, then the lines will intersect at a point. So तो हम रखेंगे, this implies that lines representing the pair of equations intersect at a point. Lines representing the above pair intersect at a point. So in this case, similarly we can do the other questions as well.